हेलो दोस्तों, आज ये हमारे पास क्लासिक 500 है 2010 मॉडल। इसकी क्रैंक अटक गई है। अब इसका इंजन होगा, क्रैंक रिपेयर होगी। अब इसको ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या है। अभी आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि देखिए कैसे खड़की हुई है। स्टार्ट करना भाई। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी, आपको सुन पा रहे होंगे। तो गाइस इसको ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अब देखिए ये 37,000 रनिंग हो रखी है इसकी। ये 2010 मॉडल है। तो गाइस देखिए अब इसका इंजन ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। क्रैंक दिखाते हैं कि मतलब खोलते हुए सारा दिखाते हैं आपको।
दोस्तों देखिए हमारा एयर सिलेंडर ओपन हो चुका है। प्ले देखिए कितनी है, ये आवाज़ क्रैंक लगी। ये सिलेंडर सिस्टम की हेड के वॉल वगैरह सारे अभी हेड वर्ड सब ओपन हो चुका अपना। अब आगे इंजन उतारते हैं, इंजन ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, फिर बताते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो गाइस हमारी देखिए इंजन ओपन हो चुका है। ये देखिए क्रैंक, ये क्रैंक की आवाज़ सुना भाई। ये देखिए ये क्रैंक खड़ा चुकी है। नीचे रख के दिखाइए, साइड प्ले दिखा। ये देखिए दोस्तों, तो गाइस ये था इंजन रिपेयरिंग का। अभी हमने इसको इंजन ओपन किया है, अब इसका इंजन रिपेयर करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।